Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about an end-to-end Python analysis dashboard project and predictive system. So इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं उनका जीडीपी एनालिसिस डैशबोर्ड बनाएंगे और उनका प्रेडिक्टिव सिस्टम भी बनाएंगे. So first let me reload the page. Let me show you all the results, then we will discuss all the things one by one. So just click on this button and you will upload that data set. Now in the navbar we have shown something, and this is the predictive system, and this is the show analysis dashboard button. Once I click on this button, you will see here a lot of analysis. Okay, so first of all, in the navbar, what we have done, as you can see here, this is upload option. Okay, here you'll just simply upload the data set. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने टोटल रीजन लाइक एशिया इज one of the region in the world, North America is one of the region in the world, Eastern Europe, etc. So total in this data set we have 11 regions, and within each region we have a lot of countries. So total 11 region, and within 11 region total we have 227 countries. Okay, after that we have shown that how many countries we have within each region. Just let me zoom in a bit. Yeah, so here you can see in sub-Sahara Africa हमारे पास 51 कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरिब में 45 है, एशिया में 28 है, वेस्टर्न यूरोप में 28 है, ओशियानिया में 21 कंट्रीज हैं, नियर ईस्ट में 16 कंट्रीज हैं. सो दीज आर ऑल दी काउंट ऑफ कंट्रीज, एंड यू कैन सी दैट in northern Africa we have only 6 countries, northern America we have 5, and Baltics we have 3. So total we have 227 countries and 11 region. All right, so once I click, before showing this analysis predictive system, let me show you some analysis of the data set. So I have clicked on the button and let me zoom out a bit. So here you can see, first of all we have display the data. So in this data we have country, these are all the countries जो कि 227 थे. उसके बाद रीजन है, हर रीजन यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है. Like this is the country Afghanistan, this is the region Asia where Afghanistan is located, and this is the population of Afghanistan, this is the area in square of Afghanistan, and you'll see there are a lot of things that we will discuss later. But first let me show you here. Just wait, give me a second. Okay, 1 minute. Like this. Now I can simply show you a little like this. So here you can see coastline के साइल है उस एरिया में या नहीं. In case of Afghanistan we don't have coastline because Afghanistan is located within mountain end area and there are no ocean, no samandar, nothing. Okay, migration rate, you can also see infant mortality of Afghanistan, and for each country you can see GDP per capita. Afghanistan has a very low GDP, that is 700. Literacy rate in Afghanistan, and all these things. So we'll discuss the data set a bit later, but first we need to understand a few more analysis. Like, just a minute, let me zoom out a bit. Yeah, so here यहाँ पे हमने एवरेज जीडीपी लिटरेचर एग्रीकल्चर पर रीजन. So if you remember we have total 11 regions. So for each region we have shown literature, GDP and agriculture. Now in Asia we don't know how many countries we have, but in Asia we have a lot of countries like Pakistan, India, Japan, China. I'm talking about overall Asia, not just North Asia, South Asia. This is the total Asia. We have Sri Lanka, Bhutan, Nepal, a lot of countries. So in इस तमाम एशिया का जो जीडीपी है वो है 3450. and let me show you literacy 906 for Asia only, and agriculture 92. The same thing goes with Baltics, Eastern Europe, Latin American, Carib, Near East, Northern Africa. So you can see all these things. After that we have aggregated the data per region. This is quite interesting. Again, total we have 11 regions like Asia, Baltics, Eastern Europe, Latin America, Near East, etc. Now for each region, first of all we have joined all the countries. Now in Asia we have how many countries? Just let's see.
या सो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट जितने भी कंट्रीज होंगे दे विल बी राइट हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल दी रीजन. सो विद इन एशिया वी हैव ऑल दिस, कंबोडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ऑल countries. And overall population of Asia is this. As you can see, we have a lot of countries, and China, India, Pakistan has a lot of population. So total a lot of countries like Japan, Korea. So यहाँ पे population भी ज़्यादा होगा. उसके बाद area, total Asia area is this in square, and population density and coastline. So definitely Asia में बहुत से ऐसे countries है जहाँ पे coastline है like oceans. Okay, तो यहाँ पे again ज़्यादा है. नेट माइग्रेशन, कितने लोगों ने हिजरत किया था, नहीं किया था. इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों की मोर्टेलिटी रेट कितना है. जीडीपी, वेट अ मिनट, जीडीपी पर कैपिटा, अगेन दिस इज टू मच, मीन ज़्यादा है सबसे. अगेन लिटरेसी रेट कि यहाँ पे बहुत से कंट्रीज है हमारे पास. फॉन्स, एरेबल काश्त के काबिल ज़मीन कितना है. क्रॉप्स, as you can see, crops rate. Other, I don't know what other means here, but we will see a bit later. Climate rate, birth rate, death rate, agriculture, industry and services. And you can see all these things for all the other region. Baltics, Eastern Europe, Latin America, Near East, Northern Africa, etc. अब मैं आपको दिखाता हूँ top 15 countries GDP per capita. So let's see the top 15 countries GDP that are more than other countries. So यहाँ पे the first country that is Luxembourg. Luxembourg की GDP सबसे ज़्यादा है जो कि above 50,000 है. ओके, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की GDP सबसे ज़्यादा है जो कि 38,000 है आई थिंक. नॉर्वे थर्ड नंबर, बर्मुडा is on fourth number, and this is extra thing, forget this word mean, but the last country or the 15 country in GDP ranking is Hong Kong. Okay, you can also see Australia. So actually यहाँ पे हमने just GDP display किया है top 15 countries का. Alright, now let me show you something amazing. Top 5 Asian countries GDP literature. I am talking about a single region. You can display instead of Asia country another region. I'll show you when we implement the code, but यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ. We have shown two things for Asia, top 5 Asian countries. Now within Asia we have a lot of countries: China, Japan, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, etc. Okay, Korea, North Korea. We have a lot of countries, but I'm talking about the literacy rate of top 5 countries and GDP rate of top 5 countries. और उसके लिए मैंने पाई का इस्तेमाल किया. So here the literacy rate of Japan and North Korea is maximum in comparison to other countries. So जापान और कोरिया का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, 20.2, 20.2. राइट, सेकंड नंबर पे 19.9%, 19.9% मंगोलिया और साउथ कोरिया का है. एंड फिफ्थ नंबर पे यू कैन सी मालदीव्स 19.8. ओके, द सेम थिंग गोज विद जीडीपी. अगेन जापान इज अ 53.2% GDP per capita in Asia. Second number पे 33.6% for South Korea, and on third number we have 3.4% for Mongolia. For Maldives 7.4% for third number. चौथे नंबर पर आपके पास मंगोलिया है एंड फिफ्थ नंबर नॉर्थ कोरिया. सो एक तरह का डेटा एनालिसिस है एंड हमने विजुअलाइज किया है. कोड ट्रिकी हो सकता है बट मैं आप लोगों के लिए आसान बनाऊंगा. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लॉट. व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिस्प्लेड top 5 countries GDP for each region per each region, not for Asia or for some other region. I have displayed separately for 11 region, 11 plots, 11 pies. Let me show you how. अच्छा, यहाँ पे ये आपको दिखाई सही नहीं देगा. आई डोंट नो कि आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, बट ये मैंने इस तरह प्लॉट किया है. द फर्स्ट पाई रिप्रेजेंट एशिया. एशिया में टॉप 5 कंट्रीज जीडीपी. डेफिनेटली वी हैव जापान, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान एंड मकावा, आई थिंक. सेकंड रीजन इज Baltics with 3 countries only because it has only 3 countries. उसके बाद this states CW of IND states, I don't know what does it mean, ये कौन सी रीजन है मैं नहीं जानता, बट हमने किया है यहाँ पे यूक्रेन है, तुर्कमेनिस्तान है,
Kazakhstan, Russia. So on top there is Russia. Okay. Eastern Europe we have Slovenia, Poland, Hungary, Slovakia, says Republic. Okay. So इस plot का मतलब है, the only meaning of this plot is that we have total 11 region, and for each region we have separately plot a pie for top 5 countries GDP per capita. This is the meaning of this plot. Now let's implement this entire code, but before implementing let me show you the predictive system. इस predictive system का मतलब है, the meaning of this predictive system, if you put, just let me show you, if you put country, let's say I'm going for Afghanistan GDP prediction, so I'll put Afghanistan name, population, area, this thing, this thing, this thing, this thing, लिटरेसी, दिस थिंग, आगे जितने भी थिंग्स है वो सारे के सारे इनपुट में डालूंगा एंड इट विल प्रेडिक्ट दिस 700. नाउ मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे सेपरेटली एक निकाला था, रैंडमली नॉट सेपरेटली, 11 इंडेक्स पे जो पड़ा है, जस्ट कंट्रोल सी, these are the input. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, I'll explain all the things a bit later, but first let me show you. These are all the inputs. Let me paste and click on this predict GDP button, and here you can see we have 12,500 value for GDP per capita for this country, all inputs. Now we don't know which country we have put because I really don't know, but if you want to check the result of this, इसको मैं एंड में आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी मुझे ये सारे के सारे दोबारा रन करने होंगे. सो मैंने यहाँ पे ओपन किया है नोटबुक. जस्ट ओपन योर नोटबुक. वी विल इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स लाइन बाय लाइन. ऑल्सो ओपन योर PyCharm, right? So wait a minute, let me remove all these things, delete, because we are going to do all this from scratch. इन PyCharm मैंने दो फाइल बनाए हैं, helper.py, app.py. इस पर हम एंड में फोकस देंगे. But first of all you need to open up your notebook, and first of all in notebook you have to import NumPy for mathematics, pandas for data cleaning, all these things, Seaborn and Matplotlib for data visualization and attractive plots. Alright, उसके बाद मैंने बताया था that we are also going to perform a predictive system, so definitely we'll have to take scikit-learn library classes. Like हमारे डेटा सेट के अंदर we have a lot of categorical columns, or maybe 2 or 3, we don't know, but we have to convert them into numbers, so we need label encoder or any other encoder, and I have explained all the scikit-learn tutorials in my this channel scikit-learn tutorials playlist. उसके बाद model selection से I have imported trend split because we have to split our data into test and trend sets. So after that I am using in this video for predictive system 3 different models: linear regression from scikit-learn linear model class, decision tree regressors from scikit-learn.re, and random forest regressor from scikit-learn.ensemble. One thing you have to remember, this is a regressor problem because GDP has continuous value. I'll show a bit later. After that we have to calculate the error for all these 3 models. So definitely we need mean squared error and mean squared log error, few others, but we will focus only on these 2. So we have to use also matrices. So let me run this cell. So yeah, okay, I'll share the dataset, the notebook code, and also the PyCharm 2 files code. In this video description you can download that from my GitHub account, also the dataset. Okay, so let me import the dataset. This is the data name countries of the world.csv. Let me show you. Now first we need to understand the data, because if you understand the data then everything will be easy for you. Okay, so in this data first of all we have a column by the name of country, in which we have 227 countries like Pakistan, Afghanistan, India, America, blah blah blah. उसके बाद for each country we have a region, but unique we have only 11 region. Okay, if there is Afghanistan, and we know that Afghanistan is located in Asia, then there will be Asia. If there is India or Pakistan or China or Bhutan, then we know that all these countries are located within Asia, so there will be Asia. Okay, and population for each country's area, population density per square, and coastline mean कि क्या उसके साथ समुंदर है या नहीं, and we know that there is no ocean, no sea, no coastline in Afghanistan, so 0. Okay, net migration,
उसके बाद GDP per capita. GDP per capita is our output column because we are going to predict this column, and these all the values are continuous float type, and this is a regression problem. Literacy rate, just let me show you a few others. We have arable का मतलब ये है कि यहाँ पे कास्ट कितने परसेंट में होता है या कितने वैल्यूज में होता है. Crops, other, and this thing, to be honest, I don't know what other means. Climate की इस कंट्री में क्लाइमेट की रेट क्या है. बर्थ रेट, पैदाइश कितनी होती है. डेथ रेट, अमवात, एग्रीकल्चर रेट, industry and services, so all these things. But here is a problem. The problem is, if I show you the null value, what you have to do, df.isNull.sum function and run it. Here in some columns we have missing value. We will see this later, but before that let me show you the data types of all the values. So df.info function को कॉल करो और ये आपको दिखाएगा. Now country and region are okay because they have string type and we need string type for this. Population and area are already in integer type and we need integer or float, but they are in integer, so we don't need it. But all other countries like population, coastline, migration, infant mortality, literacy, GDP is okay, but phones, arable, crops, other, climate, birth rate, death rate, इन सब का जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, एंड दिस इज नॉट ओके. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट ओके बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म EDA, visualization, and also training a model, so we have to convert them all into numbers because they are already in numbers. Okay, they are already numbers, all the values are in numbers, but their types are string. These numbers is means if, just let me show you, wait a minute, give me a second. Here in birth rate, let me add a cell. Here in birth rate we have this value, okay, 0,38. So in agriculture this is like this, okay, in column this is like in string. So machine will not understand these things and it will give you an error. Whatever you are performing, EDA, visualization, dashboard, whatever, it will give you an error. So we have to convert all these into numbers. All right, so meaning we have to convert to float, but we don't need 4 columns, this 4, because they are okay. So what I can do, I'll declare a variable by the name of columns to keep as int, and these two int, these are population, and just wait, population, and this one he already integer him. Okay, so yeah, उसके बाद columns to skip, you will understand all things, don't worry. उसमें हमारे पास country and region, so I'll simply concatenate columns to int. So after all, we have within this columns to skip variable we have 4 column, population, area, country and region. अभी के लिए बस इतना समझो. Now I'll run a loop. Okay, I'll simply run a loop. Let me zoom out a bit so that we can see all the things. For call in df dot column, and let me show you to print the column. What you'll see, data frame object has no attribute column. I think it's columns. Yeah, columns. So these are all the columns. Now what this loop is doing here, it's taking one by one columns from this DF. First country, second region, then population. On third iteration it will take area, on fourth iteration it will take population, on fifth it will take coastline, etc. But I'm going to ignore this one. Okay, I'm going to ignore all this because after all I am feeling I'm converting object to float. So here I'll put a check. If this call, let's say first time this loop take country, so if this call not in which this thing, okay, this thing, then
you have to convert the type of any other column. So df के अंदर जाके call.str string में convert करता हूँ, replace करता हूँ. One thing more I should do, comma with empty space and convert the type of this to a float. Now you might be thinking why we have used this thing, this replace, this comma. Let me show you. Within each column you'll see that each value is separated by comma. So जब आप इसको float में convert करते हो, then you will face the comma error. So while converting or before converting, we have to remove this comma. Okay? Yeah, perfect. And after that we have just still it will give you an error. Let me run it. Still it will give you an error. As you can see here, it shows error that can only use .str accessor with string values. All right. Now the thing is that we didn't ignore one column, that is this GDP. Because of this GDP, it gives this error. So we have to explicitly say that all the other columns except the first four that I mentioned and this GDP, you have to focus on those columns. Let me show you. So here I'll add another condition, and df call dot data type equal to object. Now there you have to put capital O. Let me run it again. There is an issue. D type equal to, I don't know, just let me check. I think issue यहाँ पे इस and का है. Python में we are using two and. One is this, one is this. So I think here we have to use this and, if I'm not wrong. Let's see. Yeah, it worked. So what this line of code means, simply understand. I've also explained it right here. Don't worry. Once you get this notebook, you'll see all the things. First of all, we are ignoring the four columns that we have explicitly mentioned, like population, area, country, and region. This loop take all the columns one by one, and it will check if it take other column except these four, then it will come right here, and here it will convert that column data types into float. But before converting, we have to tell you have to remove this comma, because within each object type data we have a comma. Okay. Yeah, now let me show you again the data types. Now this time check. The first four columns are as it is: country, region, population, area, object, int. Okay, it didn't work. Why? As type float. Let me run it. Okay, because we didn't store it on. So df call will be equal to this thing. Now let me run. Now you'll see all the others column are float. So ये point tricky था. Sometime you have to work with custom code. Okay. So I hope कि यहाँ तक आपको clear हो गया होगा. Now let's talk about field missing values, because I've shown you that we have some missing values, like right here. I've shown you that in GDP we have one missing values, and within literacy we have 18 values and few other columns. But once you explore the data set, each column, I want to fill all the missing values within that specific column by either by mode or mean or median. So I have to implement logic. So first of all, I have to take all the columns one by one. So for all in df dot columns, but this time I need values, not only columns. So if I print, you would see it didn't print. I don't know why, but yeah, it will take values one by one. So first of all, I'll check. पहले तो मैं check करूँगा, because I have already few columns that has no missing value, like country, region, a lot of columns that we don't have any missing value. So उसका मैं check लगाऊंगा. If if df dot call is null dot sum equal to 0, then ignore मारो. तो हम continue का इस्तेमाल करेंगे. Continue. Okay.
इफ कॉल इक्वल टू क्लाइमेट, यहाँ पे एक कॉलम है क्लाइमेट, अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे तो उनको मैं मोड से फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। दिस कोड इज ट्रिकी, अभी के लिए आप इसको जस्ट फॉलो करो, जस्ट फॉलो द कोड। आई विल एक्सप्लेन ऑल द कोड अ बिट लेटर बिकॉज इन दैट पॉइंट यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, ओके। अगर क्लाइमेट है तो मैं यहाँ पे गैस वैल्यू निकालूंगा, गैस वैल्यू विल बी इक्वल टू df dot group by region. You will understand everything, don't worry. Group by region and take climate values and use apply function, and here use lambda, Python lambda function. I told you that could be a tricky, but I'll explain, don't worry. And after that apply mode, x dot mode, but maybe we have repeated mode, so I will be taking just maximum 1. Let me add a cell and let me explain this code. So if I use df dot group by region com climate, run it, and after that use this line of code, control C, control V, you would see this thing. So for each region we have taken the climate column. For Asia we have taken the maximum value. If I remove this one, you will see for each region not only one value, a lot of value. See, for Asia you have 0 is maximum, and this value is also most repeated, so these are the most two repeated value, but within this most two repeated I'm taking the maximum one. So I am going to take the first one, and this will be going for all other region, and if you go down you'll see, okay. So यही इसका मतलब है. I hope you get the point. So because I'm taking, अभी के लिए मैं just setup कर रहा हूँ, because I'm not going to fill the missing value. For now I'm just setting everything. Else guess value, if the column is mean, this one is not a climate. If it is another column, then I'll do again df dot group by, I'll use median of GDP. Let me show you. या मैं उसी ही कॉलम का सबसे पहले रीजन के थ्रू मैं इसको वो करूंगा, और उसी ही कॉलम का मैं मीडियन निकालूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आओ, जस्ट लेट मी कॉपी दिस थिंग, अभी के लिए ये जो कॉलम है कंसिडर करो कि कोई ना कोई इसके पास कॉलम है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। Now here I have to specifically mention one column. Let's say which column I should use. Literacy. Okay, I'm taking literacy for now. So this is the literacy or literacy cum median. Okay, so for each region I have filled literacy. I've taken from literacy the median for each region, and I have stored it within, where is the code? Yeah, right here, within the guess value. So matlab kya, we have three checks. One by one we are taking column values. First of all, we are checking that if you have a column that has no missing value, then ignore it. But if you have a climate column, then you have to take the maximum value of climate for each region. But for all other columns you have to take a region, within that region that specific column median, and store it in this. Now I will run another loop outside else, mean right here, to fill the value for region in df dot region. What I was supposed to do, just let me check, but we have to take unique values because we have only 11 regions, so unique. Okay, and then I have to fill the missing value. So df के अंदर जाके इस कॉलम के लोकेशन पे जाके मैं df का ये कॉलम थोड़ा सा ट्रिकी है, उसका जो
null value है is null and also check df का this column equal to region, this region. I'll explain. Okay, fill it with gas value because we have set gas value. Okay, right here gas value का region. ओके मैंने कॉपी किया था, मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ क्योंकि ये लाइन में खुद यहाँ पे फॉरगेट कर गया, सो मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस रीजन से हमने 11 यूनिक वैल्यूज निकाले। सो दिस लूप विल रन 11 टाइम्स एंड इट विल टेक 11 रीजन। फर्स्ट टाइम इट विल टेक Asia. Now within Asia what we are going to do, within df we are taking the column that we are taking from here, and within this column location we are checking that you have to again go df column is null, first check the missing value. Okay, अच्छा यहाँ पे मैंने एक parenthesis मिस किया था, वो आप लोग देख लेना, and also check that the region is equal to that region, then you have to fill the gas value, और गैस वैल्यू आपके पास था गैस वैल्यू का रीजन। लेट मी रन इट। ओके सो लेट्स चेक इट। द मिसिंग वैल्यू df dot is null dot sum. now we don't have any missing value. ओके now ये काम आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते थे साइकिट लर्न का इस्तेमाल करके या पेंडास का, बट सम टाइम आपको स्पेसिफिक कॉलम में स्पेसिफिक वैल्यूज को पुट करने हैं। लाइक इन केस ऑफ क्लाइमेट वी वर गोइंग टू put the mode, and in other we were going to median, so that's why you have to use sometime custom Python code. All right, so data cleaning almost is done. Let me show you the shape. Again we have total 227 rows, meaning 227 countries with 20 columns. Let's talk about data analysis part. Now within data analysis part, first of all I'll print a region. So very simple, df dot region, but I am going to take unique number of unique. So just wait, if I run it we have 11, so I'll give it a name by region. After that I am going to take countries, not countries, yeah countries, but I will take unique countries like this. So we have 227 countries. now I am going to take countries per region कि एक region के अंदर कितने countries है। so बहुत simple है, df dot region dot value counts. मैं इनको स्टोर करता हूँ countries count region countries. just let me check region countries, क्या मैंने सही किया है? I think I have made mistake. Let's see. No. Yeah, it's okay, but यहाँ पे हमने parenthesis का यूज करना होगा तभी तो ये यहाँ पे सही दिखाई नहीं दे रहा है, but instead of country we have to use region definitely. Yeah, so sub-Sahara we have 51 countries. अब मैं इनको तरतीब देके प्रिंट करता हूँ. I'm going to print all the things. So I have copied. So I have just changed the variable name. Other things are similar, okay, and countries per region. And after that I have just printed. So let me run this thing. Now here you can see we have total number of region 11, total number of countries 227, and total number of countries per each region we have this. Sub-Sahara is 51, 45 for Latin America and Caribbean. Asia के अंदर 28. Okay, now what we have to do, we have to display or print average region GDP literacy and agriculture. So let's do it. So very simple, for each region I am taking to
calculate the mean of GDP, literacy and agriculture. So df dot group by method for each region. I wanna calculate these three things: GDP, per capita, literacy and agriculture, and I am taking their mean. Okay, so region Asia GDP is this, but these are too big values, so I can use Python roundup function and comma by 2. Now it's perfect. Okay, so yeah, let's store it into a variable. I have a name, just control C. This is the variable in which I have simply store this result, because we are going to display all these things within dashboard. So ये करने के बाद now let's aggregate data for each region. This is interesting, and this is quite interesting. What we are going to do, we are going to calculate for each region all the countries, that how many countries within this region has, not counting, but actually we are grabbing their names, their population for each region, average area, population density, so a lot of things. तो अब अगेन एक ट्रिकी सा कोड होने वाला है. सो मैं क्या करता हूँ, रीजन डेटा विल बी इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय रीजन, और इसका मैं एग्रीगेट निकालूंगा, और एग्रीगेट के अंदर एक डिक्शनरी पास करूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू टेक कंट्री, और कंट्री का यहाँ पे मैंने कॉमा से ज्वाइन करने हैं जितने भी कंट्रीज है रीजन के अंदर, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, समथिंग लाइक दिस. सो आई थिंक आई नीड अ कस्टम फंक्शन, बट फॉर नाउ आई विल यूज population. Population is just sum, nothing else. Sum. उसके बाद we have this column, okay, like this, और इसका भी मुझे sum चाहिए, तो ये हो गया अपना sum. And population density का मुझे चाहिए mean. I am going to calculate for each region the mean of population density. So like this, I am performing a lot of function within a single group by, this should be group by aggregate function. I told you that I'll create a custom function, so let's do it. So मैं यहाँ पे आके क्या करता है, custom function बनाता हूँ. I'll explain a bit later. So def join countries, और इसके पास एक डेटा आएगा, और ये हमें पलट के क्या देगा, रिटर्न बाय कामा. आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल द कंट्रीज विद इन ईच रीजन, बिकॉज एशिया के अंदर आई एम टू जॉइन बाय कामा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, all the countries that are actually located in Asia, and all for other region as well. और चूंकि we have to specifically say the data type of this data will be str, okay, and I will call this function right here. So ये करने के बाद now we have to continue our process here. So we have done right here. Now let's talk about the other column as well. तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया है टाइम सेव करने के लिए, then I'll explain. So we have the same thing, region data. First of all, we have df.group by region, and then we have calculated the aggregate. First of all, for each region we have join all the countries by comma by calling this function. Then we have calculated the sum of population, the sum of area for each region separately, density per square for population mean, and coastline mean, net migration mean. I think all the others are mean because they are float type, okay. And if I run this thing, you would see, as you can see, you would see this thing, region Asia, all the countries, total population for all the countries just for Asia, total area for Asia, population density for area, and all the things. आप लोग ये explore कर लेना. Now let's display or visualize top 15 countries GDP per capita, okay.
यानी वो कंट्रीज जिनका जीडीपी सबसे ज़्यादा है उनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो वो ओनली टॉप 15। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये जो प्लॉट है, फिगर है, ये बनाना होगा। सो फिग एंड उसका एक्सेस विल बी इक्वल टू plt डॉट सब लॉट्स हम यूज़ करते हैं, और उसके अंदर फिग साइज में रखता हूँ 16 इंचेस विल बी इसका विड्थ एंड 6 इंचेस विल बी इसका हाइट। सो अगर मैं रन करूँ, ये हमारा एम्प्टी फिगर बन गया। अब इस फिगर के ऊपर अगर मैंने जीडीपी ऑफ टॉप 15 कंट्रीज प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मुझे कंट्रीज को निकलवाना होगा। सो मैं क्या करता हूँ, एक नया जुगाड़ लगाता हूँ, df डॉट सोर्ट वैल्यूज बाय जीडीपी पर कैपिटा, और फिर मैंने क्या करना था, इसको अभी के लिए मैं वो करता हूँ, कमेंट करता हूँ और उनका हेड करके टॉप 50 निकालो। अच्छा, यहाँ पे मैं सॉर्ट वैल्यूज के अंदर एक फंक्शन होता है असेंडिंग विल बी फॉल्स, क्योंकि मैं जो है ना जस्ट उनको प्रिंट करना चाहता हूँ जिनका जीडीपी सबसे हाई हो। अगर फर्स्ट कंट्री का जीडीपी हाई है तो वो पहले आएगा, क्योंकि असेंडिंग मैंने फॉल्स किया है विद इन टॉप 15 कंट्रीज। लेट्स सी, ascending spelling is, I think, yeah, it's okay. Name ascending is not defined. Let's see. अच्छा, इशू यहाँ पे ये है कि मैंने डबल कोट और सिंगल कोट एक साथ यूज किए हैं। Ascending df dot sort values GDP per capita. Okay, everything is perfect. Then ascending will be false dot head 15. Okay, it worked. So Luxembourg, Luxembourg GDP is higher. उसके बाद we have United States. This is the GDP. We have Norway. This is the GDP. Okay. All right. So मैं अब इनको एक वेरिएबल में डालूंगा। इनको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ बाय द नेम ऑफ दिस। अब मैं मीन कैलकुलेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मीन कैलकुलेट करते वक्त डेटा भी बनाऊंगा। देखना, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक होगा कंट्री, एक होगा दिस जीडीपी पर कैपिटा। ओके, लेट मी कॉपी दिस वन। आई एम जस्ट क्रिएटिंग एम्प्टी कॉलम्स अभी के लिए, ठीक है। और इस कॉलम को मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूं अपने मर्जी से, वर्ल्ड मीन लाइक दिस कंट्री को, और जीडीपी को मैं जो वैल्यू देना चाहता हूं वो डेटा से दूंगा। डीएफ के अंदर जाके जो जीडीपी पर कैपिटा है उनका मीन, लेट मी रन इट, लेट मी चेक द मीन। ओके, मीन से ये चीज हटाओ। सो ये आ गया अपने पास, कंट्री के अंदर वर्ड मीन है एंड जीडीपी के अंदर टोटल जो जीडीपी है उसका मीन आ रहा है। अब मैं इन टॉप जीडीपी कंट्रीज एंड मीन को जोड़ूंगा। ओके, सो यहाँ पे pd डॉट कनकेट फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या मैं लिस्ट में पास कर सकता हूँ? यस। सो फर्स्ट लिस्टिंग टॉप जीडीपी कंट्रीज का जो ये दो कॉलम है, यानी कंट्री एंड जीडीपी पर कैपिटा, और उसके बाद मैं इसको मीन के साथ जोड़ूंगा। सो एक्चुअली वी हैव टू डेटा, मीन एंड टॉप जीडीपी कंट्रीज। आई एम कंकैटिनेटिंग दिस टू, और यहाँ पे कैट के अंदर एक फंक्शन होता है इग्नोर इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे ये जनरेट करता है, तो मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए। यानी एक्चुअली व्हाट आई वांट टू पुट कंट्रीज इन इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट। और इसको मैं नाम देता हूँ जीडीपीज। लेट्स चेक द रिजल्ट। जीडीपीज, अमेजिंग। सो ये टॉप 15 कंट्रीज आ गए। इसने इंडेक्स जनरेट किया, डोंट नो व्हाई। लग्जमबर्ग
This is the GDP for Luxembourg, United States, Norway, all these countries. Let's plot them. So what I can do, अब तो बहुत सिंपल हो गया, SNS लाइब्रेरी का सहारा करेंगे और यहाँ पे मैं बार प्लॉट का यूज करूंगा। बार प्लॉट के अंदर एक x होता है, एक y होता है, एक डेटा होता है, एक रिलेटिव होता है। रिलेटिव में बिल्ट इन वैल्यू देता हूँ set1, बाद में दिखाऊंगा। x पे मैं रखूंगा किसको, कंट्री को, और y पे मैं रखूंगा जीडीपी पर कैपिटा, और डेटा में रखूंगा, हाँ डेटा में क्या रखूंगा, जीडीपीज। ओके, दीज आर द जीडीपीज। अभी के लिए मैं जस्ट इसको रन करता हूँ। लेट मी अनकमेंटेड, देखते हैं कि एरर देता है या नहीं। मे बी सेट, आई थिंक सेट का जो एस है वो कैपिटल है, आई एम नॉट रॉन्ग। या सो या वी प्रिंटेड top 15 countries, लेकिन not attractive, so we have to make it attractive, we have to put some titles, so let's do it। so मैंने यहाँ पे जो एक्सेस बनाया था इसको मैं एक्सेस कहता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक्सेस कहता हूँ। x dot set x label on x what we have on x countries। ओके, इसके अंदर जाके मैं x से कॉल करता हूँ लेवल को, x के लेवल को, और जाहिर सी बात है वो लेवल मेरे पास कंट्रीज हैं, और लेवल के बीच पैडिंग देता हूँ 15 का। सो मतलब लग्जमबर्ग और यूनाइटेड स्टेट के बीच में 15 का पैडिंग होगा। द सेम थिंग आई हैव डन फॉर y लेवल। y लेवल पे हमारे पास जीडीपी वैल्यूज हैं। सबसे पहले मैंने गेट किए हैं y लेवल्स को, यानी इन काउंट को, और 30 का मैंने यहाँ पे लेवल दिया है। उसके बाद x के अंदर जाके x एक्सिस पे लेबल को कॉल किया है और उनका सेट किया है फॉन्ट साइज 16। मतलब मैंने अगेन x पे जो कंट्रीज पड़े हैं उनके फॉन्ट को सही किया है। द सेम थिंग गोज विद y। उसके बाद x टिक्स मैंने रखा है 45। मैं चाहता हूं कि ये जो नेम हो ये वर्टिकल हो। अभी ये आई थिंक 90 डिग्री पे है, आई डोंट नो कि 90 पे या 0। अगर आप 45, हाँ ये 0 पे आई थिंक, अगर आप 90 पे रखते हो तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा थेड़ा रखना चाहते हो इस तरह, तो 45 डिग्री पे परफेक्ट होगा। लेट मी शो यू। सो अब देखो थोड़े से थेड़े हो गए, यानी 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बिल्कुल वर्टिकल होगा, जो कि नॉट गुड। सो ये करने के बाद लेट्स डू top 5 countries literacy rate and GDP only for Asia region or for any other region। okay, so let's do it। here we will use filtering। so DF के अंदर जाके DF का जो रीजन है वो अगर इक्वल टू एशिया है, एशिया, but before that we need to use str dot strip। एक एरर आ रहा था स्पेसिंग का, तो वो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिप का यूज करना होगा, ठीक है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। दिस लाइन ऑफ कोड इज मींस वी आर ओनली टेकिंग एशिया रीजन, एंड विद इन एशिया आई एम टेकिंग top 5 countries literacy and GDP। so we have a lot of ways, but let me show you another new way। and largest, there is a function and largest। okay, why it's not working? and largest, okay it worked। largest, अब इन n largest के अंदर आप दो चीजें दोगे, count of the countries you want। I want only 5, on the basis of which, on the basis of literacy। okay, so first of all what we have done, we have filtered Asia from region, only this thing, and on the Asia we have called this n largest function, number of largest value, on the basis of literacy only 5। let me give this top 5 Asian countries literacy, ठीक है। अब one more thing, we have only literacy but we don't have labels। also we don't have GDP per capita, so very simple। I am taking to check only which column I need,
Definitely I need literacy. Let me show you. And let me paste it like this. If I run it, I have this thing. So मैंने क्या किया, country निकाला. Japan was the first country, North Korea, Korea South, Mongolia and Maldives. Only these 5 countries within Asia. And these are the literacy and GDP. So I'll store it again within the same variable. Now we are okay. Now we have to just plot this pie. Okay, first for literacy, then for GDP. So first of all, we have to create figure. Fig and axis will be equal to plt dot subplot और उसके अंदर fig size will be equal to 16 by 5 6. And उससे पहले what I need labels are the 5 countries. So how to take them from top 5 countries? Okay, and also we have to take literacy rate from top 5 Asian countries का जो अपना literacy है. And also we need GDP will be equal to top 5 countries का GDP. All right, so हमारे पास labels भी आ गए, because I have to display here labels as well, meaning the country. So that's why I have taken them separately. Also literacy rate and GDP per capita भी आप कह सकते हो. Now let's use pie plot. So what I can do now, I have 2 columns. This is axis 0, this is axis 1. So on axis 0 I want to display literacy rate. So within axis 0 I'll call pi, and within pi I'll pass literacy rate, and labels will be my labels. And auto PCT yani percentage, these are the percentage. Auto PCT will be equal to 1.1 float value. And also we can give startup angle 90 degree. And what I can do, let's give a title, this title. So axis 0 पे मैं सेट करता हूँ टाइटल को अपना लिटरेसी रेट्स. सो मैंने क्या किया है, ये जो बाकी है वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है. सो द सेम कोड, क्रिएट अ पाई चार्ट फॉर लिटरेसी रेट्स. एक्सिस 0 पे लेट मी मेक इट एक्सिस लिटरेसी रेट्स, these are the literacy rates, और इसको मैं कहता हूँ GDP वैल्यूज. ठीक है, सेम वही है, कुछ नहीं है. Now on axis 1 yani this column I have put GDP values, labels are the same label, same thing and just title. उसके बाद टाइट लेआउट को मैंने कॉल किया ताकि इसकी जो लेआउट हो वो टाइट हो. लेट मी रन इट, hopefully it should work. Axis subplot object is not subscriptable. Okay, why not subscriptable? मैं एक काम करता हूं, मैंने कौन सा ऐसा कहाँ पे गलती की है. एवरीथिंग इज ओके. तो मैंने तो देखा लेकिन कोई आइडिया ना हुआ. सो मैंने जो पहले कोड लिखा था वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये चीज़ जो है ना इसको ये वाला कहता हूँ. ठीक है, लेट मी रन इट अगेन एंड अगेन. सो या इट वर्कड. आई डोंट नो कि मैंने कहाँ पे गलती की थी. बाकी वही सेम कोड है, कोई चेंजेस नहीं है. जस्ट यहाँ पे मैंने एशियन के बजाय एशिया किया इसको. अदर थिंग्स आर ऑल ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जापान मैंने जो एक्सप्लेन किया था, दिस इज द लिटरेसी रेट फॉर जापान, मालदीव्स, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, GDP per capita for the same 5 countries. Let's talk about top
5, this should be 5 top 5 countries GDP per each region. Okay, so here you clearly seen it could be a tricky code because we have row 1, row 2, row 3 and row 4, and within each row we have 3 columns. Okay, first we need figure and axis, then we have to extract each region top 5 countries, and let's do it. So what I can do, first I should create a figure, I think. So first of all, df dot group by region का जो जीडीपी है उसका मीन कैलकुलेट करो। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का हमने जीडीपी फॉर ईच रीजन मीन कैलकुलेट किया। ओके, यानी सॉरी ऑल रीजन का, ठीक है, ईच रीजन का, नॉट ऑल रीजन का। इसको मैं कहता हूँ रीजन जीडीपी, ठीक है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द लेबल्स, इसको मैं कहता हूँ रीजन विल बी इक्वल टू region GDP dot index because I'm taking this thing, and these are the values. So this will be mean GDP will be equal to region GDP dot values. See, control C, control V, control V and run it. Okay, so हमारे पास mean GDP आ गया, this is the mean GDP, and we have also a region. Okay, perfect. So मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, चूंकि ये बहुत ही सिंपल है टाइम सेव करने के लिए। वही रीजन जीडीपी, ठीक है, सेम है, रीजन्स मीन जीडीपी, नंबर ऑफ सब प्लॉट्स। ना यहाँ पे जो सब प्लॉट्स मैंने बनाने हैं वो रीजन के बेस में बनाने हैं, तो रीजन्स का लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो टोटल 11 रीजन्स हैं, तो 11 पाइज बनेंगे, 11 सब प्लॉट्स बनेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। नंबर ऑफ कॉलम्स में 3 रखना चाहता हूँ, वी कैन ऑल्सो चेंज इट, यहाँ पे मैंने कमेंट डाला है, अगर आप 4 रखना चाहते हो 4 डाल दो। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट किया। अब मैं नहीं जानता कि कितने रोज बनेंगे, आई डोंट नो, सो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ सब प्लॉट्स दिस टोटल 11, इससे माइनस किया 1 को तो बचेगा क्या 10। जब मैंने ये डिवाइड किया नंबर ऑफ कॉलम्स पे तो कितना बनेगा, तकरीबन आपके पास 4 आएगा। ये मैंने इसलिए ऐड किया 3 आएगा, नॉट आई थिंक ये 3 आएगा। ये 1 मैंने इसलिए ऐड किया कि लेट से इन फर्स्ट रो वी हैव 3 subplots, in second row we have 3 subplots, in third row we have 3 subplots. So हमारे rows complete हो गए, but maybe we have another subplot, it could be 2 or 1, so you don't need to ignore it, you have to print it in new row. So इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया। उसके बाद वही सेम फिगर एक्सेस plt dot subplots। now हमेशा याद रखना कि subplots के अंदर आप only this thing नहीं दे सकते, you can use some other parameter like constraint layout, number of rows, number of columns. Just let me show you. Control C, control V. I want row 4 column 3, size will be this and all these things, and size will be 20 by 8. we'll see, check it। यहाँ पे जो हाइट है, विड्थ है वो तो सही है, लेकिन हाइट बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाइट जो पाई बनेगा उसके अकॉर्डिंग बने, तो इसलिए मैंने क्या किया 20 विल बी इसकी जो विड्थ है वो है, इट्स ओके फॉर मी, बट हाइट वुड बी अकॉर्डिंग टू द पाई। सो रो वाज 4 एंड नंबर ऑफ रोज वाज 4, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 विद 4 सो इट विल बी डबल्ड। सो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये कुछ और अच्छा सा हो जाएगा। और कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करता है कि लेआउट को जस्ट कंस्ट्रेंट करता है, नथिंग एल्स।
यहाँ पे मैंने एक्सिस को फ्लैटन किया है, ठीक है। सॉरी, एक्सेस को मैंने यहाँ पर रेवल कॉल किया है। इसका मतलब ये है कि अगर 2D एरे है तो ये इसको 2D एरे में फ्लैटन कर देगा। अगर 1D एरे है, जाहिर सी बात है, वी हैव 1D रीजन and mean is a 1D, so we have to make them 2D. so for that I have used on access called revel. उसके बाद मैंने separately define किया colors. These are some built-in colors, let me show you. So plt.cm.tab20c, these are some built-in function. np.arrange20, I want to create 20 colors. Now there will be a lot of values you will not be able to understand, but yeah, these are some colors. In py we have a parameter by the name of autopacity, जो परसेंटेज डालता है। शेडो में थोड़ा डालना चाहता हूँ, उसको भी मैंने ट्रू किया है, ठीक है। सो या नाउ लेट्स प्लॉट ऑल द पाइज, ओके, द 11 पाई और 11 सबप्लॉट्स। सो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, फॉर आई इन रेंज सबप्लॉट्स कितने थे मेरे पास, 11। सो ये लूप 11 बार चलेगा और हर बार चलने पे मैं कुछ कैलकुलेशन है, कुछ चीजें जनरेट करूंगा। एक्सेस बनाऊंगा और एक्सेस आई से आएगा, फ्रॉम दिस आई। उसके बाद कंट्रीज निकालूंगा, कंट्रीज किससे आएगा, डीएफ के अंदर जाके जो रीजन है अगर वो इक्वल टू दिस रीजन्स का आई है, और ये रीजन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये रीजन मैंने यहां से निकाले हैं। उसके बाद मैंने कंट्रीज के जो टॉप 5 जीडीपी वाले कंट्रीज है वो निकाले, द सेम कोड जो हमने ऊपर यूज किया, सो टॉप कंट्रीज। उसके बाद मैंने कंट्रीज नेम निकाले बिकॉज आई वांट इन लेबल्स कंट्रीज नेम। उसके बाद कंट्रीज जीडीपी बिकॉज आई आल्सो नीड जीडीपी, नॉट ओनली लिटरेसी और समथिंग एल्स। यहाँ पे तो मैंने जस्ट टॉप 5 निकाले थे, लेकिन सेपरेटली मैंने इससे इसको निकालने होंगे। सो टॉप कंट्रीज जीडीपी ओनली कंट्री जीडीपी में आ जाएगा। एंड रीजन कलर्स, मैं चाहता हूं कि जो मैंने कंट्री नेम्स डिफाइन किए थे, कहां पे मैंने कंट्रीज नेम डिफाइन किए थे, वेयर वाज द कंट्री नेम्स, आई डोंट नो कंट्रीज, या दिस आर द कंट्रीज नेम्स। And now if we have, let's say we have total 50 countries, let's say 20 countries, so it will generate 20 colors from my colors. So actually we have 20 colors, but maybe we have only 10 region, so it will only generate 10 colors, not 20. And this will be region colors, okay. अब यहाँ पे मैंने कुछ और कोड किया है, तो इसी ही लूप के अंदर वो भी पेस्ट करता हूँ। Now within py you can also use explode. This is a parameter, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं एक्सप्लोड डिफाइन करूं, यानी थोड़ा सा एक कंट्री की परसेंटेज और दूसरे कंट्री की परसेंटेज में थोड़ा सा गैप जनरेट करना चाहता हूं, तो मैंने 0 एक्सेस से मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ कंट्रीज नेम है उससे, जाहिर सी बात है अगर 5 कंट्रीज है तो उसके हिसाब से होगा। उसके बाद आई हैव जस्ट प्लॉट द पाई, एक्सेस डॉट पाई, द सेम कंट्री जीडीपी, लेबल्स विल बी कंट्री नेम्स, ऑटोपीसीटी विल बी ऑटोपीसीटी, स्टार्टअप एंगल विल बी 90, कलर विल बी रीजन कलर, शेडो विल बी शेडो, दैट वाज ट्रू। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली से दिस थिंग, ओके, इट्स परफेक्ट, बट दिस इज गुड प्रैक्टिस, ओके। एक्सप्लोड विल बी एक्सप्लोड। उसके बाद सेट एस्पेक्ट इक्वल, इंश्योर द पाई इज ड्रॉन एज अ सर्कल, ये इंश्योर करता है कि जो पाई है वो बिल्कुल सर्कल जैसा होगा। और टाइटल मैंने रीजन के हिसाब से, जो सब प्लॉट होगा वहां पे जो रीजन का सब प्लॉट होगा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे उसको प्लॉट किया और उसका फॉन्ट साइज 14 रखा है। सो ये था कोड, लेकिन मुझे कुछ और कोड भी करना होगा। आउटसाइड दिस लूप आई हैव रन अनदर लूप फॉर सेफ्टी। डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि मे बी sometime we don't know, in data set we have only 11 region, but we don't know, maybe in one region there is no country, maybe it could be possible. So अगर ये कोई empty subplot generate करता है sub pi, let's say we have total 11, so let's say it generate only 8, total we have 11, so it's mean that it will generate 3 more empty subplots because total we have 11 and it's generated 8. So I want to ignore that, I don't need them. So if in case there is a remaining empty subplot, then ignore it. How? हमने यहाँ पे लूप रन किया है, नंबर ऑफ सबप्लॉट्स से नंबर ऑफ कॉलम्स को डिवाइड किया नंबर ऑफ रोज से। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 3, नंबर ऑफ रोज 4,
जब डिवाइड करोगे 4 3 12 और सब प्लॉट्स आपके कितने थे, हाँ नंबर ऑफ सब प्लॉट्स वी हैव 11, सो ये 11 से जाएगा कब तक, 12 तक, मतलब एक ही बनाएगा, एक ही, चाहे वो एम्प्टी हो या फुल हो लेकिन एक ही बनाएगा। सो 11 to 12। उसके बाद डिलेक्सेस एक्सेस विल बी आई, डिलेक्सेस मतलब इसको डिलीट करेगा, अगर आएगा तो इसको हटाएगा। उसके बाद सब प्लॉट्स एडजस्ट विड्थ स्पेस 0.5, ये बाद में मैं दिखाऊंगा। एंड सब टाइटल फॉर द इंटायर फिगर इज दिस, लेट्स रन इट एंड सी। ओके आई न्यू इट, क्योंकि मैंने कुछ कोड कॉपी किया, कुछ मैंने खुद टाइप किया था, तो यहाँ पे आई थिंक वेरिएबल का कोई इशू है। सो मैं इसको फिक्स करता हूँ। सो मैं चेक करता हूँ, मैंने वो जो प्रीवियस कोड था वो यूज किया यहाँ पे, या सो ये आ गया अपने 5 countries for each region: Eastern Europe, is Latin America, Near East. After that we have Northern Africa, Northern America, Oceania. So हर कंट्री के लिए हमने यहाँ पे जीडीपी जो है ना टॉप 5 कंट्रीज के लिए फॉर ईच रीजन हमने कैलकुलेट किया। आई नो दैट कोड वाज ट्रिकी एंड मैंने मैनुअली टाइप नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता, बट अगर आप इसको स्टडी करोगे इट्स वेरी सिंपल। या आई हैव यूज सम मैथमेटिक्स बिकॉज इसी तरह की प्लॉटिंग के लिए आपको दिमाग लगाना होगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा, और ये करते वक्त मुझे बहुत सारा टाइम लगा था, ठीक है। सो आप लोग अब अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो, इस पार्ट की समझ नहीं आई है, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम्स, जस्ट फॉलो इट। After that, I have some optional, and this is option. This code is option, you ignore it. I've just calculated the correlation between each column. Okay, this code is option, ignore it. So let's talk about modeling. हमारा जो डैशबोर्ड था वो काम कंप्लीट हो गया। Now let's train our model. Okay.